Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. And आज मैं बात करूँगी the most asked question in my life about these things, about this. So yeah, आज मैं बात करूँगी अपने dreadlocks के बारे में. I actually got a response, a comment here from a wonderful person. I don't know who, but very nice comment and very wonderful comment. So thank you so much for that comment though. And yahi comment like keeps me motivated to make more to make more and more vlogs. एंड या सो आज ही मैंने अपने बाल भी धोए, तो अच्छी सी धूप भी आई आज. एंड आई जस्ट वांटेड टू क्लियर आउट दीज डाउट्स एंड दीज क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में रहता है ड्रेडलॉक्स को लेके. सो दीज आर माई ड्रेडलॉक्स राइट नाउ एंड and yeah, this is my normal hair as well. तो ये है एंड ये है. सो इट्स लाइक हाफ एंड हाफ बेसिकली. अगर आप देख सकते हो इट्स लाइक हाफ एंड हाफ बिकॉज मेरे पहले लाइक लेट मी स्टार्ट फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड. So it all started when I got two dreadlocks like this and this, and two here when I first came to Kasol. And uske baad it just started growing अपने आप. I don't know how, I don't know कैसे क्या what happened, but अपने आप बाकी भी dreadlocks बनने लगे थे. तो फिर मेरे को किसी ने बताया कि either keep it nice and symmetric and maintained, या फिर मत रखो. ये शौक पालने वाली चीज़ नहीं है. इट हैज़ अ वेरी स्पिरिचुअल मीनिंग. एंड देन आई like dived deeper into it. So then I had like proper original hair dreads, and उसको मैंने रखा, बट दैट वाज आल्सो वेरी कमिंग आउट वेरी अनइवन. मतलब जैसे आप मान लो दो ये ड्रेड्स के एक ड्रेड बना है, ये एक ड्रेड पतला सा हो गया है. सो लाइक दिस. सो वेरी लाइक दिस इज वेरी फॉर्म, very like in a good form. So that time it was like very कोई मोटा कोई पतला कोई छोटा कोई बड़ा. And yeah, so I had to cut them all off क्योंकि मेरे को किसी ने ये बताया कि रखो तो ढंग से रखो वरना मत रखो. इट इज़ नॉट अ फैशन स्टेटमेंट, it is something very spiritual. So that's what I did. I cut them off. मैंने थोड़ा टाइम अपने बालों के साथ जिया. But that wasn't me. I could not feel the real me inside it. So मैंने फिर आई कसौल. So I'll tag their channel, their Instagram page here, and this is them who did my dreadlocks in Kasol. They also have something in Goa as well. They came from Goa to Kasol, and उन्होंने मेरे सारे dreads कर लिए. ठीक है, like 40-45 dreadlocks. सिर्फ तब भी यही बचा हुआ था जो सामने के बचे हुए थे, बट उन्होंने सारे कर दिए. And it was pretty nice. Like it was pretty expensive अगर आप प्राइस पूछोगे, क्योंकि मेरे ओरिजिनल वाज लाइक वेरी छोटा. मेरे ओरिजिनल बाल थे ही नहीं, मतलब मेरा बॉब कट हो गया था. तो उसमें ड्रेड्स बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एंड मुझे वो एलियन जैसे ऐसे ड्रेडलॉक्स नहीं चाहिए थे. मुझे लॉन्ग लेंथ पसंद है. ठीक है, मुझे रियली लॉन्ग लेंथ पसंद है. तो
मैंने यही बनवाए थे, बट दीज वर लाइक 40-45. Now they have grown, and so this yellow, sorry, blonde color, this is original hair, original human hair, not mine. ठीक है, and this is also not mine, original hair, but not mine, and this is my original hair. ये इतनी प्यारी धूप लग रही है ना, so you can see everything. This is my hair, and this is the extensions that that I got over there. So ये extensions और real dreadlocks सब कुछ मिला के around 40-45,000 for 45 dreads हो गए थे, which was not a bad deal for me. ठीक है, I wanted it, and I wanted it very uniform, very nicely. I wanted this blonde extensions. I wanted color. I wanted, like, that was what I wanted. And I came back to my form. I um, got like more and more views and stuff like that on my dreads and stuff, and more attention. दो ये सब attention के लिए नहीं था, ये सब views के लिए नहीं था, ये सब was a very spiritual meaning to me, and that is why I got it done. It was not a fashion sense to me. It was never a fashion statement for me. It was very spiritual and very connected to me. ठीक है, so I got everything done. I got 40-45 full head done, and then I started working. I started traveling. Every month हमें maintenance कराना पड़ता है, where like for example ये सारा बाल is like coming out and it's not looking nice and tidy. तो मेरे को मेरा टाइम हो गया है, मुझे इस पे कराना है, and a lot of like your natural hair grows and comes out. तो एवरी मंथ मेंटेनेंस कराने लगी मैं. फिर दिल्ली गई मैं टू मीट माई फैमिली, एंड वहाँ पे धूप बिल्कुल यहाँ पड़ती है, बिल्कुल यहाँ. तो मेरे को स्किन इन्फेक्शन, स्कैल्प इन्फेक्शन होने लगा. आई कट देम ऑफ. ठीक है, तो करते करते मेरे अब 25-30 ड्रेड्स है, 25-30 या. एंड करते करते नाउ इट्स बैक टू दिस, where I actually have like half and half. तो मेरा ये पूरा एरिया इज लाइक नॉर्मल हेयर, एंड नीचे नीचे ड्रेड्स है, विच इज़ फाइन फॉर मेंटेनिंग. एंड अभी ये नॉर्मल हेयर में ड्रेड्स नहीं बन रहे, तो इट्स मच बेटर दैट वे. एंड so this is what is left. Let's talk about cleaning them. इनको हफ्ते में एक बार धोती हूँ मैं. एक बार नॉर्मल बाल धोती हूँ ऐसे हाफ हेड करके, एंड तब इनको टाई करती हूँ और इनको धोती हूँ. और सेकेंड टाइम जब हेड वॉश करती हूँ तो सारा एक साथ धोती हूँ. सो ट्वाइस अ वीक लाइक आई वॉश माई हेयर, आई ऑयल माई हेयर like a normal person. You just have to go to the scalp. इसमें कोई combing नहीं होती, इसमें कोई conditioning नहीं होती. ठीक है, so it is very easy to maintain for me personally, but कुछ लोगों के लिए नहीं होता. अगर आप सोच रहे हो to get dreadlocks done, first of all get it done from a professional, from someone who has years of experience. Otherwise आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बालों का भी और स्कैल्प का भी. So you have to get it done by a professional. I will also tag the people who do my maintenance in Delhi. This is their account, and they are very professional, very nice, and their work is amazing. Like मैं एक बार कराती हूँ तो एटलीस्ट 3 months के लिए मेरा चल जाता है. So I'm very due for a next appointment. I don't know when,
but I am due for it. So when I am done with the maintenance, it is even more cleaner and even more better. And secondly, you have to wash them with also apple cider vinegar once in a month. You have to oil them. धूप जा रही है. You have to oil your scalp. You have to use the least chemical wala matlab shampoo, like which has the least chemicals in it, because dreadlocks के अंदर भी shampoo जाता है and you need to get like a very chemical free shampoo. मेरे लिए अभी मैं बताती हूँ. मेरे लिए अभी हेड एंड शोल्डर्स का नीम शैम्पू इज सूटिंग मी. ट्रेसमे सूट्स मी. एंड बाकी कुछ ऑयली शैम्पूज होते हैं वो नहीं सूट करता मुझे, बिकॉज दैट मेक्स माई हेयर ऑयली एंड माई ड्रेडलॉक्स ऑयली. सो third is that these are very heavy. So like if you get them done as per your like how much you can handle the pain and the pain of making it, because it's like when they make it they pull your hair. तो ये crochet needle से होता है, and they have to lock and turn and twist and then put it all together in a dreadlock. And then fourth thing is, yeah, the fourth thing is that you have to be careful if your hair is like this much and आप dreads करा के फिर उसका half हो जाता है. So if you have like as she said, she has like knee length का length of the hair, then automatically वो half हो जाता है. So answering your question, are they manageable? Yes, but they are low maintenance, not no maintenance. Let me tell you the easy parts. No daily styling. I literally wake up and just comb my this hair and just that's it. Washing is easy, drying is difficult, but there is no hair fall stress. Okay, so your hair doesn't fall, it is basically inside the dreads, and after every wash I just do this is the rubbing part, that you have to rub your dreads. Let me tell you the hard parts of having dreads. The difficulty of drying dreadlocks is real. ठीक है, you can't dry it just like that. You have to dry it under the sun, or if you have like a really strong hair dryer, only that way it works. So drying is a difficult part. It's like washing clothes. और कपड़े धो के आप कैसे धूप में रखते हो सुखाने को, just like that I have to keep my dreads under the sun, and then I have to dry them. So second sad part of having dreads, the weight. So the longer the dreads, the heavier the hair is, and when it's wet it's really heavy and your neck pain starts. And the last sad part for me having dreads is sleeping, क्योंकि सोते हुए ये आप साइड पे लेके सोते हो, इट्स लाइक अनदर ह्यूमन बीइंग वाला स्पेस ये टेक करता है. ये पूरा एक इंसान की जगह ले लेता है. सो ऑन माई डबल बेड लाइक आई हैव रियली फ्रेश cotton or silk pillowcase and pillow cover, and ये dreadlocks ऐसे जाते हैं पिलो के नीचे ऐसे करके, एंड पिलो के नीचे मैं इसको रख देती हूँ. एंड कभी कभी ये साइड पे भी रहता है बेड की, एक साइड पे मैं. सो स्लीपिंग विथ ड्रेड्स इज समथिंग
that is very difficult. If you have any questions, guys, please comment and let me know, and I'll make another video for that. And don't forget to like, share, and subscribe to this channel to know more about dreads. Okay, see you. Bye bye.